is a video editing software. You know, Adobe Premiere is a video editing software, and it's an international software. It's a international software. Software. All right. So now, okay, Harjinder and Ravi, can you tell me, what is editing? What is editing? Who will tell me? कौन बताएगा? कौन बोलेगा मुझे? What is editing? Hello. Yeah, I can hear you. बोलो. एडिटिंग क्या है? हाँ, editing क्या होता है? What is editing? किसी भी चीज को अच्छे ढंग से उसको दर्शाना लोगों के सामने, उसे एडिटिंग कहते हैं. Right, very right, very right. Ravi, you tell me. Sir, हाँ. video editing में combine some video clips to create a movie. Right. Okay, all right. Both are good. Both are have given a good answer. I tell you. Okay, video editing. Editing means what? See, editing means what? Copy, cut, paste, and joining. This is called editing, where you cut, copy, paste, and join. That is editing. Editor, matlab, if you see the tailor who cut the, who stitched the shirt, जो कपड़ा बनाता है, वो भी एक editor because he cut the clothes. So editing मतलब वो होता है, that is editing. Editing means in one sequence where we arrange like all shots and scenes in one sequence, copy paste with other scene, that is called editing, right? So that will do practically, हम लोग वो practically करेंगे, that will do the practically, वो practically करेंगे हम लोग. Okay, understood? All right, so editing. Okay, sir, understand. And editing has the format. When we do the shooting, when cinematography, they do the shoot, they have a technical setting. They on this setting they want to do shoot. So that setting also editor have to know. Editor को मालूम होना चाहिए वो setting. ठीक है, तो setting क्या होता है? Write down NTSC. Harjinder, do you know NTSC? नहीं सर. नहीं मालूम है? नहीं जी. Write down NTSC. Screen दिख रहा है ना? You guys can see the screen. हाँ जी. NTSC का full form है National Television System Committee. सिस्टम कमेटी. ठीक है, in NTSC frame size क्या होता है? What is the frame size of NTSC format? ये format है. This is called a format. When we do shoot, no, so we have to decide either we want to shoot on NTSC, either we want to shoot on shoot with PAL. So which format and which setup we want to choose? So that we have to decide. So write down frame size. So say frame size 720 into 480. This is the frame size. हाँ. 1920 FPS मतलब सर. हाँ हेलो. हाँ बोलो. FPS मतलब इसका क्या है जी? फ्रेम पर सेकेंड. फ्रेम पर सेकेंड. फ्रेम पर सेकेंड. ओके सर. मीन्स इन एक सेकेंड के वीडियो में, इन 1 सेकेंड वीडियो वी हैव 30 फ्रेम. 29.97 मतलब क्या होता है? 30 होता है ना, तो वी हैव 30 फ्रेम. हाँ जी. ओके, ओके सर. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू शुड नो ऑल दिस. हाँ जी.
तो एनटीएसी कहाँ पे ब्रॉडकास्ट होता है? वेयर वी ब्रॉडकास्ट एनटीएसी फिल्म और एनटीएसी वीडियो सैटेलाइट पे ब्रॉडकास्ट जो होता है ऑन सैटेलाइट, वी ब्रॉडकास्ट इन यूएसए, कनाडा, रशिया एंड मेनी अदर कंट्रीज वेयर they support 29.97 fps. Whichever country support 29.97 fps, in that country we broadcast NTSC. ओके जी। Right on, Pal. पाल। Pal full form is phase फेस पाल। have you note down have you done with the writing? Hello, Ravi, Harjinder. हेलो। Yes, आप लोग ने लिखा? Ravi, can you have you wrote it down? No, sir. Okay, so PAL का full form है, PAL full form is Phase Alternate Line, and the frame size is 720 by 570, 576. You can say 576 also. Okay, and the FPS is 25. FPS means frame per second. मतलब जो एक सेकंड का, if you have a 1 second video, in that we have 25 frame. Frame means a single image. One frame means one single image. So frame से ही video बनता है. With the help of frame, that create a video. With the help of images, we create a video. Understood? So that all we are going to learn practically in Adobe Premiere. Understood? Okay. So this is the today we are going to learn theory lecture as this is the first lecture. Okay. So you all this understood, and this is broadcast in India, Africa, France, and many other countries. Whichever country support 25 fps. Whichever country support 25 fps. Understood? Hello. हाँ जी, हाँ जी। I will erase this. Now write down color balance. Color mode, sorry, color mode. First you write down RGB, then CMYK.
Have you write it down? Yes, sir. This is called a color mode: red, green, blue, cyan, magenta, yellow, krypton. Krypton means black. HSL, hue, saturation, and lightness. Okay, so this is called a color mode, and in this color mode only we do the color grading and color correction. Like with the help of RGB and with the help of CMYK, we do the color correction. Okay, so without color, this color mode, you can't do anything, because I mean we have this much of color, right? So if HSL, the HSL means hue, saturation, and lightness. Hue means what? A rainbow. So हम लोग को sky पे rainbow दिखता है ना, sky पे rainbow. That is called a hue. A different color we have in hue. Saturation means I'll tell you practically when we do the color correction. Lightness means a brightness and contrast. So this is a color mode for the color grading, and of course definitely when we do the shoot also and do the edit. So practically we do shooting on RGB, and we broadcast also in RGB. Understood? Okay, sir. Red, green, blue. All right. This is you understood, right? And So now we had completed NTSC and PAL. So this is NTSC and PAL. That is a standard format. Matlab that is we use for serial, news channels, whatever we see it in television. That we applied 720 by 576. But in theater or in other categories where we use HD quality. HD का full form is what? high. High High definition. definition. The HD start from with 1K. 1K means what? Somebody has says no, we want to shoot in 1K. So what do you mean by 1K? 1K means 1920 into 1080. Okay. 1K means 1920 into 1080. Sometimes we also say that 1080p. P means pixels. P means pixels. Okay, and after this we have 2K and we have 3K, we have 4K. So 2K start with 2000 frame size, 3K say 1K start with 1920 1080. Same way 2K is also start with 2440 into 1080. 3K also start with the 3000. So 4K is a very high quality, is a very high resolution. It's a very high resolution 4K. Understanding or not? So in theater basically we work on 2K. For theater film releasing we work on 2K. सिनेमा में Cinema जो हम लोग whatever we see cinemas theater we work on 2K. We work on 2K. इसकी क्या होती है जी? जैसे इसका है 1920 गुणा 1080 है, उसकी कितनी होती है 2K की? Understood? हाँ जी. And this part is always keep changing. This part is always keep changing. This part is always keep changing. Do you remember this? Understood? All right.
So now write down video we had completed. Now write down audio setup. Audio we have mono and Mono stereo. stereo. What do you mean by mono? Mono has a single channel, right? Single channel, right? I mean, it doesn't have a two channel. It has a single channel. Mono has a single channel. Stereo has a two channel. सर रिकॉर्डिंग के लिए मोनो या स्टूडियो होता है? रिकॉर्डिंग के लिए मोनो पे करते हैं या स्टूडियो पे करते हैं? स्टूडियो पे करते हैं. We work on studio. ओके, वोकल रिकॉर्ड. So vocal whatever we record in studio, we record in stereo. हाँ जी. Understood? हाँ जी. Because stereo has a two channel, na, left and right. See, we have a speaker too. We whenever you purchase the speaker, you always get a two speaker, two part. दो part का speaker मिलता है. It is one is left and one is right. हाँ जी. Okay, so that is a two channel. Stereo has a two channel. हाँ जी. Understood? हाँ जी. Okay, and after this, when we talk about Dolby Digital, hyphen the stereo sound. When we talk about stereo sound, which is called 5.1, 3.1, or sometimes 5.2. So this is all like setup on which purpose you want to shoot. Like 5.1 पे setup of. So this is called a Dolby. तो 5 जगहों से अलग अलग सुनाई देता है ना. From 5 parts theater में when we go in theater, sometimes we get the voice from your back, sometimes we get voice from your right side, from your left side. So that's the surrounding audio we have. That is means that audio is work on 5.2 or 4.1. जो हम थिएटर में जाते हैं तो दोनों चारों तरफ से आवाज आती है ना. यहाँ से एक्सीडेंट का आवाज आता है. From there we get dialogue. From here we get something other voice. So that is a surrounding voice. वो surrounding voice होता है. हाँ जी. All right, understood? हाँ जी. Now write down sample rate. Sample rate means what? You guys know very well what do you mean by sample rate means. तुम लोग ने सुना भी रहेगा. तुम लोग सुने रहोगे and you all know what is sample rate. You have seen like 44k hertz करके लिखा रहता है. हाँ जी. Okay, so 44k hertz means 44,000. K means 1000. K means 1000. This is 1k means 1000, 2k means 2000, 3k means 3000, 4k means 4000. Understood? So this is the quality. See, by default we work on 44. I know 44k. After 44 we have 48k hertz. Then we have 60,
6 kHz. You know, different kHz. We have 98. We have 120 kHz. हाँ So, जी so if you shoot on 44 kHz and you can't work on 120 kHz. If you work on सर, 120, हाँ सर थोड़ा थोड़ा हिंदी में जरूर बताओ जी। हाँ हिंदी में बोलूं, हाँ जी मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बोलता हूँ। अगर आप 44 में करोगे ना हाँ जी तो 120 में नहीं कर पाओगे। ओके जी If you work on 44 kHz, you can't work on 120. एंड अगर ओके 120 पे करोगे ना तो 44 पे नहीं कर पाओगे। If you had worked on 120, you can't switch on 44. ठीक है? Why you can't change? Because वो ऑडियो स्पीड will change. अगर फास्ट रहेगा तो स्लो हो जाएगा, स्लो रहेगा तो ऑडियो फास्ट। ओके जी Alright, this is called a sample rate. Understood? हाँ जी हाँ सर जैसे सिंपल रेट आपने लिखा हुआ है, इसको एक बार हिंदी में पूरा बताना, ये किसके लिए होता है? सैंपल रेट ये होता है कि ऑडियो क्वालिटी होता है। ऑडियो क्वालिटी मतलब क्या होता है, जब भी आप ऑडियो देखते हैं तो उसकी एक क्वालिटी होती है। स्टीरियो मोनो तो सेटअप है, बट क्वालिटी क्या है? जैसे आपका वीडियो का फ्रेम साइज होता है ना 720 बाय 576 1920 1080, वैसे ही हाँ जी ऑडियो की क्वालिटी होती है केहर्ट्ज पे। हाँ जी समझे? जितना अच्छा केहर्ट्ज रहेगा उतनी हाँ अच्छी क्वालिटी रहेगी। अच्छा समझ रहे हो? हाँ जी हाँ जी कुछ डाउट है? डू यू हैव एनी डाउट्स? नहीं जी नहीं? नहीं जी रवि, No, sir. do No you doubt. have any doubts? Hello? हेलो So you guys don't have any doubts, right? हाँ जी Okay. So this is the theory lecture. This is the first lecture of theory. So this I will send you the recording. मैं recording भेज दूंगा पूरा. You go through all this. This is very important. जो भी whatever we work, sometimes we work on 25 FPS. But that same film, जैसे कि टाइगर फिल्म है, टाइगर जिंदा है, ठीक है? That film I want to release in India. I want to release in America. But in India, we work on 25 FPS, and in America, we work on 30 FPS. तो क्या हम स्विच कर सकते हैं? यस, हम स्विच कर सकते हैं, हम FPS चेंज कर सकते हैं। ठीक है? वो मैं आप लोग को आई विल टीच यू, मैं सिखाऊंगा वो चीज। समझ रहे हो? हाँ जी All right. So this is very simple. This is technically very strong. You should know all these, technical words. सर एक बात पूछनी है जी, पूछो ना। जैसे ये लिखा हुआ है सिंपल रेट, हाँ में 48 66 98 120, जैसे हाँ मोबाइल पे सुनते हैं नॉर्मल ऑडियो आती है, जब यही थिएटर में सुनते हैं उसमें बेस आती है, वो इसकी वजह से आती है बेस या कैसी आती है, उसकी क्वालिटी क्या होती है? See, first and foremost, आप ऑडियो जब आप सुनते हो तो जो मोबाइल पे होता है ना, वो ना मोनो होता है। अच्छा मोबाइल मोनो होता है? समझ लो, मोबाइल पे जो आप हेडफोन लगाते हो ना, हेडफोन, हाँ जी वो मोनो होता है। बट कभी कभी किसी किसी का मोबाइल और हेडफोन ना, हेडफोन स्टीरियो होता है ना, तो उसका ऑडियो स्टीरियो बहुत अच्छा होता है, अलग अलग सुनाई देता है। वो हेडफोन बड़ा वाला होता है ना, वो स्टीरियो होता है। जो पतला वाला होता है ना, वो हाँ तो थिएटर में सुनते हैं हम जी, वो इस उसमें प्रेशर होता है वोकल में, वो हाँ। कौन सी होती है क्वालिटी? 120 होती है या क्या क्या होती कौन सा? है? जो सिनेमे में सुनते हैं हम जी, उस वोकल में प्रेशर होता है, कहाँ पे बेस सुनते होता हैं? है, कहाँ पे? तो वो कौन सी क्वालिटी होती है? 320 होती है या कौन सी होती है? जो रिकॉर्डिंग करते हैं वो। हाँ जी
ऑडियो रिकॉर्डिंग करते हो तो सामने वाला सेटअप करता है ना, उसके ऊपर है वो 44 पे करना है 48 पे करना है, तो हालांकि लोग 48 पे ही करते हैं। जो सिनेमे में हम सुनते हैं, जैसे कोई भी मूवी लगा लो, दंगल लगा लो, जहाँ 40 कोई भी, जब 48 48। 48, ठीक है जी। ठीक है। रवि, डू यू हैव एनी डाउट्स? No doubt, sir. All right, great. So, Harjinder, you want to ask something? हाँ जी। कुछ पूछना है आपको? नहीं जी, बस। समझा आपको? कहीं डाउट लगा आपको? कोई डाउट नहीं है। ठीक है, आज हम लोग इतना करते हैं थियरी लेक्चर, जो कल नहीं परसों जो लेक्चर होगा वो सॉफ्टवेयर से स्टार्ट होगा। ओके जी। ठीक है, ये अभी दिमाग में रखो। दिस कीप इन योर माइंड, कीप इन योर माइंड व्हाट एवर आई हैड थॉट यू टुडे। ये दिमाग में रखो जो मैंने आज सिखाया है। ओके। ओके, एंड कुछ भी क्वेश्चन अगर, हाँ, एंड ये लेक्चर के बाद आप लोग लेक्चर के बाद आफ्टर लेक्चर ये रिसर्च करो, एनटीएससी पाल वीडियो सेटिंग 1K 2K 3K 4K, डू रिसर्च। हाँ जी। Ravi, after lecture, you research on NTSC and PAL. Whenever you shoot, before shooting, you should check your video frame size. हाँ, एडिटिंग से पहले हम लोग क्या करते हैं? एडिटिंग से पहले वी चेक फ्रेम साइज की, वीडियो किस पे शूट हुआ है, कौन से फ्रेम साइज पे शूट हुआ है। तो ऑलवेज यू शुड चेक योर फ्रेम साइज। ओके जी। समझे? हाँ जी। चलो, टेक केयर, टाटा, बाय, सी यू। ओके सर। Okay, sir. Bye. ओके, बाय।